What is multimedia? In this video tutorial, we are going to learn and discuss about multimedia, its 5 elements, how computer is a multimedia machine, use of multimedia in education and in business, multimedia services, what is multimedia projector. So let's start. What is multimedia? Multimedia is a medium of communication. Multimedia is a combination of two words, multi and media. Multi means many and media is the plural form of medium, which describes any channel of communication. Communication means the exchange of information. It plays a vital role in human life. It helps facilitate the exchange of information and knowledge. Multimedia is a form of communication that combines different content forms such as text, audio, images, animations, and video. There are 5 core elements that can be combined to create a multimedia content. Those 5 core elements are text, images, audio, animations, and video. These 5 core elements are further divided into two categories, static and dynamic. In the static category, the content remains same. In dynamic category, the content keeps changing. वर्ड मल्टीमीडिया दो लफ्ज़ों को मिला के बनाएं, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मतलब है बहुत सारे एंड मीडिया का मतलब है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या फिर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंसान की ज़िंदगी में बहुत मेन रोल प्ले करती है। जब हम अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। थ्रू आउट लाइफ इंसान कम्युनिकेट करता रहता है। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का एक ऐसा फॉर्मेट है जो 5 चीज़ों की कम्बिनेशन से बना है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या फिर साउंड फाइल, एनिमेशंस एंड वीडियो। These are the 5 core elements of multimedia. Let's discuss about them in detail. Elements of multimedia. Number 1 is text. Text is an important component used in many multimedia applications. They are characters that are used to create words, sentences, and paragraphs. Text alone provides just one source of information. Basic purpose is to convey a message or information. It involves the use of text types, styles, size, colors, and background colors. Text is mostly used for the titles, headlines, menu, paragraph, list, etc. Few examples of text are given here. मल्टीमीडिया का फर्स्ट एलिमेंट टेक्स्ट है। इस कंपोनेंट के अंदर अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर्स यूज होते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ टेक्स्ट इज टू कन्वे अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर टेक्स्ट के डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स शो किए गए हैं। हम टेक्स्ट को यूज़ करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या मैसेज को कन्वे करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस एलिमेंट इज अ टेक्स्ट बुक और अ न्यूज़पेपर। सेकेंड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया इज इमेजेस और ग्राफिक्स। Graphics plays an important role in multimedia because humans are visually oriented. Images including photographs, illustrations, drawings, clip art, icons or any other non-text elements like symbols on a website or in social media are example of graphics. There is no movement or motion in these types of pictures. We call them static graphics. For instance, icons, drawings, illustrations, clip art and pictures. Multimedia के अंदर graphics बहुत important role play करता है। हमारा ब्रेन पिक्चर्स को देखकर क्विकली रिस्पॉन्ड करता है एंड कोई मीनिंगफुल मैसेज या इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है। इन ग्राफिक्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनको हम मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ करते हैं। इन पिक्चर्स में कोई मूवमेंट या हरकत नहीं होती जिसकी वजह से इन्हें हम स्टैटिक ग्राफिक्स कहते हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया इज ऑडियो और साउंड। ऑडियो इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी साउंड और नॉइस इन अ रेंज द ह्यूमन ईयर इज कैपेबल ऑफ हियरिंग। Any digital information with speech or music stored on and played through a computer is known as audio file or sound file. One of the most common types of audio file formats used today is MP3 format. ऑडियो मल्टीमीडिया का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हम मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो को स्पीच, म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। Few examples are given here. This voice is an example of a computer sound file. Animation is the process of designing, drawing and making layouts. Through animation we can move pictures in motion. We can make a video also. We can capture movements of pictures through mobiles, camera or any digital media. Animations are created from a sequence of still images. Each image is slightly changes from previous one. मल्टीमीडिया के अंदर हम पिक्चर्स को मूव करके एनिमेशंस बना सकते हैं। इन्होंने डायनामिक पिक्चर या मूवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Few examples are shown here. The most important element of multimedia is video.
Video is an electronic medium for recording, copying, playback, broadcasting, and display of moving visual media. Video is the visual part of a recorded program or something recorded to watch in the future. मल्टीमीडिया के अंदर वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा ब्रेन वीडियो इन्फॉर्मेशन को लंबे अरसे तक याद रखता है। It also increases the retention rate of our brain. Examples is shown here. In this technological era, we need these equipments, we need smart learning, we need ICT based learning for the students. We have to prepare them for the 21st century, and for that they need the ICT based learning environment. This is a journey about educating SIN, and in this journey we operators are playing a very small role by putting our efforts with the support and help of SIN government and SIN Education Foundation. SEF's philosophy is that if you want to bring about change. How a computer is multimedia machine. Multimedia is the use of computers to present text, graphics, audio, animation, and video in integrated format. Multimedia is most common on the internet and typically invites interaction from users. Uses of multimedia. Multimedia is commonly used in education and business. In education, teachers use multimedia elements to deliver lessons effectively for various learning styles. For example, a student can work in groups to create a digital video project instead of a paperwork. In business, multimedia is a necessity for engaging customers online. For instance, a product on an e-commerce store website may include photos, text description, and a video of that item to highlight the product benefits. हम कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके यूटिलाइज करते हैं। हम मल्टीमीडिया को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस दोनों में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं। These are the uses of multimedia. Multimedia services. Few multimedia facilities are digital multimedia libraries, e-newspapers or e-magazines, digital audiobooks, video tutorials, interactive multi- and single-player games, basic television and entertainment services. We use application software Microsoft PowerPoint to create interactive and attractive presentations for educational and commercial purpose. मल्टीमीडिया सर्विसेज की कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन हैं जिनमें वीडियो ट्यूटोरियल्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करके इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज़ अ presentation device used to show content from a computer or video source on a large screen in order to benefit easier viewing for a large number of viewers. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिवाइस है जिसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देन एक लार्ज स्क्रीन पे कंटेंट को व्यू करते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को ऑफिस में और क्लासरूम्स में यूज़ किया जाता है। वेल दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू।